Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last week we have started with Goldenhar syndrome, that is hemifacial microsomia. So we have started with the clinical presentation and pathogenesis, in which we have seen there is hypoplasia or agenesis of mandible, maxilla, and there is cleft. Okay, now we'll be continuing that. Okay. So, coming to the ear malformation are similar to seen in mandibulofacial dysostosis and are associated with conductive hearing loss, extending to deafness in 50% of individual. तो ये conductive hearing loss extend into deafness. The hearing loss or deafness is due to absent or malformed middle ear ossicles. Pinna 100% of cases जब पिना इन्वॉल्व होता है तो इन 100% of cases there will be complete agenesis to residual ear skin tags that are usually anterior to their anticipated location. The ocular dermoids, which are extraocular, are mostly in the lower outer quadrant of the orbit and create a soft tissue enlargement in the area. Okay. Upper quadrant, they have dermoid with fat tissue. तो आउटर क्वाड्रेंट लोअर आउटर क्वाड्रेंट में हम लोग को ऑक्यूलर डर्मोइड्स दिखते हैं एंड दे आर लाइक सॉफ्ट टिश्यू इनलार्जमेंट. लेकिन अपर क्वाड्रेंट में हम लोग को कभी कभी लाइपोडर्मोइड दिखते हैं. लाइपोडर्मोइड इज डर्मोइड विथ फैट टिश्यू. ओके, सो दिस ऑक्यूलर डर्मोइड्स आर 60% बायलैटरल एंड 40% यूनिलैटरल. और जो 40% यूनिलैटरल होते हैं दे आर इप्सिलैटरल टू द फेशियल माल्फॉर्मेशन. मतलब जिस साइड फेशियल माल्फॉर्मेशन हुआ है उसी साइड ये 40% यूनिलैटरल वाले केसेस दिखेंगे. नाउ देयर विल बी माइक्रोऑप्थेल्मिक और एनोप्थाल्मिया, microophthalmia or anophthalmia rarely, and if this occur, it occurs with mental retardation. Vertebral anomalies is seen in 50% of cases. Common is fusion of atlas to occipital bone, vertebrae, fused vertebrae, supernumerary vertebrae, and spina bifida is also seen. Cervical vertebrae are mostly affected. 50% of patients have an associated heart abnormalities. Pathogenesis suggests a genetic factor, spontaneous mutation. Okay, जो हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट सुना है वो होता है इसमें. Just for a little more information, I have given that. So, the pathogenesis of Goldenhar syndrome is mainly a genetic factor और वो भी spontaneous mutation होता है. There is extremely variability in severity and component characteristic of this syndrome. मतलब एकदम extreme होगा, या तो एकदम 0 होगा या तो एकदम 100 होगा, बीच का कुछ नहीं होगा. तो some have single minor anomaly such as dysplastic ear or hypoplastic ramus or condyle complex, or may have an extensive array of anomalies consist with what has been called as Goldenhar syndrome, including heart defects and other internal organ defects. मतलब या तो सिर्फ एक दो जगह डिस्प्लेजिया या फिर हाइपोप्लेजिया होगा, नहीं तो पूरा एक एरे ऑफ एनोमलीज होगा जिसको गोल्डनहर सिंड्रोम बोल रहे हैं. मतलब सब कुछ इन्वॉल्व होगा, ईयर, आईज एंड हार्ट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, now coming to the differential diagnosis. First one is mandibular dysostosis, that's Treacher's Collins syndrome we have seen, but it's bilateral. Now there is peri-Robin anomaly. Peri-Romberg syndrome and peri-Robin anomaly are different. So peri-Robin anomaly, mandible is bilaterally symmetric and very micrognatic. Differential diagnosis में will consider, लेकिन पेरी-रॉबिन एनोमली में क्या होता है, मैंडिबल जो होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिक होता है और बहुत ज़्यादा माइक्रोग्नाथिक होता है. नाउ हेमीफेशियल एट्रोफी, दैट इज़ पेरी-रॉम्बर्ग सिंड्रोम. लेकिन ये जनरली पेरी-रॉम्बर्ग सिंड्रोम हम लोग ने पढ़ा है ये टीन ईयर में ज़्यादा होता है, टीन एज में.
Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.